Good morning, children. Today we are going to start a new chapter in civics, chapter 2, Diversity and Discrimination. In this chapter, today we are discussing about two important words. First one is prejudice, and the second word is stereotypes. Let's go to the chapter. Difference and prejudice. There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. So ये सेंटेंस हम लास्ट चैप्टर में भी लर्न किया था. व्हाट डू यू मीन बाई जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस. ये वर्ड सुन के कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना. जियोग्राफी ऑफ ए प्लेस मीन्स the land form in which we are living. Maybe it's a mountainous area, maybe it is a plain area, maybe it's a coastal area or plateau area or something like that. Is it okay? So geography of a place means in what type of in a land form you are living. That is called geography. So if you are living in a mountainous area, you are living in such a landscape, such a geographical area. If we are living in a coastal area, we have such a difference, difference of food, difference of clothes we wear, everything will be different. So that is the geographical place, otherwise geography of a place. Okay. And the history means the past, the past culture of that place. So all of these are influenced by the above said things, are influenced by both the geography and history of the place where we live. I think it's clear for you now. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statements. So the next paragraph is showing that India is so diverse. There are 8 major religions in the world. In the world, there are 8 major religions. Okay, every single one of them is practiced in India. All these 8 religions are practicing in India. We have more than 1600 languages. How many? 1600 languages are there in India. Are people's mother tongue. And there are more than 100 dance forms. In India, 100 se zyada. More than 100 dance forms are also there. Yet, this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. इसे ये एक फैक्ट है ना, जो हमारे जैसे है ना, who look like us, who talk like us, who talk in our own language, who dress and think like us, we like to be with them. We like such people. Is it? जो हिंदी बोलते हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं, जो मराठी बोलते हैं, जो पंजाबी बोलते हैं वो थोड़ा फेमिलियर नहीं होता है हमें, तो हम कंफर्टेबल कहाँ होते हैं? जो हिंदी बोलते हैं उनके साथ ना. सो लाइक दैट. जो हमारे जैसे ड्रेस पहनते हैं वो सच पीपल ना ज़्यादा सेफ भी होते हैं, ज़्यादा सिक्योर भी होते हैं हमारे लिए. इसे सारे लोगों को ऐसे ही है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. सॉरी, आई एम हैविंग सम कॉल, दैट्स व्हाई द साउंड इज नॉट गुड. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. Is it? जो इफ़ हम देखेंगे अगर कोई डिफरेंट फ्रॉम अस, मतलब बहुत अलग है हमसे, सो हम क्या होता है, हम उनको कैसे देखते हैं स्ट्रेंज है ना, अनफेमिलियर, थोड़ा स्ट्रेंजर जैसे है ना हम देखते हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं ना. सो एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड
or know the reasons why they are different from us. तो हमें पता नहीं वो कैसे क्यों इतना डिफरेंट है हमसे. पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक दम. जो हमारे जैसे नहीं है ऐसे वाले लोगों के साथ हम क्या करते हैं, हम एक सर्टेन एटीट्यूड बनाते हैं, हम है ना, ओपिनियंस, कुछ ओपिनियंस बोलते हैं अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक दम. हम जो हमारे जैसे नहीं दिखते, जो हमारा लैंग्वेज नहीं बोलते, उन लोगों के बारे में हम कैसे सोचते हैं, सम इन अ डिफरेंट वे, है ना. वी थिंक ऑल्सो एंड वी मेक ओपिनियंस ऑल्सो विथ अदर्स हु आर strangers for us. Is it? I think you are getting all the things what I am saying. Now, look at the statements below. So here, some statements are given. तो क्या बोल रहे? I will read it then only you can understand. Okay. So I will read the statements. So these statements are said about some rural people. Rural people are like this, that, all these things. And in this, it is said that urban people are like this, that, all these things. This is called our opinion about some people. So about rural people means villages के बारे में हम हमेशा mostly all of us think like this. More than 50% of all Indians live in villages. Villages do not care about their health. They are full of superstition. बोलते हैं ना, अंधविश्वास है ना होते हैं. और विलेजेस क्या है, हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, सब हम बोलते हैं ना. पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड and do not like to use modern agricultural technology. So villagers modern technologies use नहीं करना चाहते हैं और backward है थोड़ा, ये सब बोलते हैं. इन peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field. So बोलते हैं हमेशा हार्वेस्टिंग का टाइम, पीक हार्वेस्टिंग मतलब जब सारे प्लांटेशन हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होते हैं क्रॉप्स, उसी टाइम क्या होता है, फैमिलीज 12 to 14 आवर्स वर्क करते हैं फील्ड में. विलेजेस आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क. सो विलेज में रूरल एरियाज में ज़्यादा वर्क नहीं, इसलिए दे आर फोर्स्ड टू migrate, means they are forced to move to the cities. All these are our opinions about the rural people. Then see this, life in the city is easy. Urban people के बारे में हम क्या सोचते हैं, mostly all of the people. सिटी में easy, life easy है. People here are spoiled and lazy. बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं ये लोग and lazy है. In cities, families spend very little time with each other. फैमिली में बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं. People in cities only care about money, not about people. So only money के बारे में सोचते हैं. Living in a city is expensive है. सिटी में a large part of people's earning is spent on rent and transport. City people cannot be trusted. They are cunning and corrupt. So city people को करप्ट होता है हमेशा और कन्निंग, बहुत कन्निंग होता है ना. सो ऑल दीज आर चालाक ना, कन्निंग मतलब. सो ऑल दीज आर द थिंकिंग और ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट अर्बन पीपल. सो मोस्टली ऐसे ही सोचते लोग. ओके, नाउ वी कैन रीड दिस. डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? Prejudice, I will explain the word. Okay, so this paragraph is about only this one. Okay, urban and rural people. Some of these statements see villagers as ignorant आपको पता होगा, and superstitious, जो कुछ भी विश्वास में रखते हैं बहुत है ना, भगवान के बारे में ओवर विश्वास करते हैं ना, उसका सुपरस्टिशियस बोलता है. एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड. सिटी वाले लोग कैसे मनी माइंडेड, लेजी, कन्निंग बोलते हैं.
एंड द विलेजर्स को इग्नोरेंट, जो पढ़ा लिखा नहीं होता ऐसे सुपरस्टिशियस बोलता है. व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग दम, मतलब हमारा ओपिनियंस हमेशा कैस कब नेगेटिव होता है दूसरों के बारे में. सीइंग दम एज लेजी, कनिंग, स्टिंगी एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, देन दिस बिकम्स प्रेजुडिस that we carry about them. So ऐसे वाले opinions जो negative opinions है, this negative opinions about other people are always called a prejudice. Okay, now it is the definition of prejudice here. uh, Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. Inferior मतलब हमसे कम, हमसे low करना. Okay, that is called inferior. So this is the definition of prejudice. Means to judge other people negatively or see them as inferior. When we think that only one particular way is the best and the right way to do things, we often end up not respecting others. ना, हम जब सोचते एक ही हमारे जैसे ही बिहेव करने हैं सब लोग, और हमारे जैसे ही ड्रेसअप करना है, हमारा खाना ही खाना है, ऐसे सोचते हैं तो क्या है ये रेस्पेक्ट. हम क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे दूसरे लोगों को. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी थिंक इंग्लिश इज द एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर. इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, हम अगर ऐसे सोचते हैं तो वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली. इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे बेस्ट सोचते हैं तो अदर लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस हिंदी में, दूसरा लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं हम, नेगेटिवली सोचते हैं दूसरा लैंग्वेज के बारे में. एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश. जो इंग्लिश बोलते हैं वो लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देंगे हम फिर. एंड जो अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश, उन लोगों को क्या करते हैं हम, बिल्कुल रिस्पेक्ट बहुत कम देते या बिल्कुल नहीं देते. एंड दिस इज रॉन्ग, इज इट? ऑल लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज कॉल्ड अ प्रेजुडिस. ओके, वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मेनी थिंग्स, ओनली नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज. ओके, प्रेजुडिस बहुत अलग अलग तरीके में होते हैं. कैसे होता है? सो पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, रिलीजन के बारे में हम बोलते हैं ओनली हिंदूस आर गुड, ओनली मुस्लिम्स आर गुड, ओनली क्रिश्चियंस आर गुड. बोला तो दूसरा लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं हम, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट गुड. द कलर ऑफ देयर स्किन, ब्लैक है वाइट है करके बोलते हैं, वो भी अच्छा नहीं है. द रीजन मतलब प्लेस दे कम फ्रॉम, है ना, एक एक जगह के बारे में बोल के हम क्या करते हैं, डिसरेस्पेक्ट देते हैं. द एक्सेंट दे स्पीक इन, एक्सेंट मतलब द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कैसे बातें करें उसके बारे में भी हम बोलते हैं ना, नेगेटिवली सोचते हैं. द क्लोथ्स दे वेयर, कैसे ड्रेस पहना है, ड्रेस के बारे में भी हम सोचते हैं और नेगेटिवली बोलते हैं. ऑफन our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them. सो जब हम प्रेजुडिस बनाते, जब हम नेगेटिव ओपिनियंस बनाते, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट, हम जो दूसरा स्टाइल में रहते हैं और दूसरा हमारे से डिफरेंट है उनको बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देते हैं ना, वो फ्रेंड्स बनाने नहीं चाहते. एट दैट टाइम क्या होता है, इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट दम. हमारा एक्टिंग क्या, हमारा अपीयरेंस क्या होता है, दूसरों को हर्ट भी करता है. सो दिस प्रेजुडिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर ए वेल मैनर्ड person. Okay, so I think this is about 15 minutes past, so we can end the chapter and the lesson right now, class right now. Okay, and it's a very interesting chapter. Read this chapter. Okay, then only you can understand properly. And today at 5 p.m. there is a class, online class. All of you must join the class. Okay, it is more easy and more interesting to discuss through online classes, because we can see
each other and discuss, and you have to you can also ask your doubts also. Okay, so it's more easy and it's more good, effective also. Okay, that's why see the watch the video. Today we are discussing the chapter of history again, early cities. The same thing, the rest of the chapter will be discussed in the online class. So sharp 5 p.m, all of you join the class, don't be late. Okay, thank you.